Let's start with the concept of BBA. This is a very prime and flagship course looked forward by most of the students who are pursuing commerce stream as of now. Why BBA is the choicest option for all of these students who are looking forward to undergraduate degree courses after completion of their higher secondary. The reason behind considering BBA as a flagship program and pursuing the same after higher secondary is ample, diversified, accessible employment and job options in India and abroad. Being BBA a very professional course enables you, makes you well equipped to understand strategies, sensitivity, competition of big business houses. Whether you are looking forward to start your own organization as an entrepreneur, or let's say looking forward to avail or access an employment opportunity in top-end banking organizations or fast-moving consumer goods, or let's say in fast-moving consumer durables domain, this is one of the most suitable degree course for you. Let's start. Why BBA? BBA is basically a course which is equipped with all the ingredients and information which helps you to understand and forecast a business organization. Let's break it up. We start with financial management. Now, as we all know that without understanding the sensitivity or softness of financial management, we will not be able to start a business organization. Even if we are right at our home, we make decisions, or when we are in the decision making process, therein we do calculate all the credits and debits, let's say cash inflows and cash outflows respectively. कहने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है. टेक्निकली जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स, accounts of a partnership firm, accounts of a joint stock company, unlimited company, so on. ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको सिखाता है. कंप्लीट कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, कंप्लीट क्रेडिट, कंप्लीट डेबिट, कंप्लीट ग्रॉस प्रॉफिट, कंप्लीट नेट प्रॉफिट, कंप्लीट स्टेटस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज, असेट्स एंड प्रॉपर्टीज रेस्पेक्टिवली. ये मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताता है. अगर हम डे टू डे अपने घर में भी हैं, or let's say we have a certain pocket money which we are supposed to spend, there is always a decision making कि कौन सा पैसा is supposed to spend where on a prioritized level. ये है financial management. Second is marketing management. मैरिज सेरेमनीज होती हैं, बर्थडे पार्टीज होती हैं, हम सूट्स, एपरल्स, फॉर्मल्स पहन के जाते हैं, ब्रांडेड एवन न्यूली परचेज अपने आप को मार्केट करने के लिए. In the similar manner, when there is a product which we are supposed to sell to the customer, dispose of right to the customer, उसके लिए marketing required है. And marketing is not only limited or constrained right to selling, but the product which we develop, the product development. Marketing is all about product development. Product development is an integral part of marketing. Producing, manufacturing, raising, developing a product according to the needs of consumer. That means understanding overall consumer behavior. प्रोडक्ट बनाना है, कैसा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सी प्रोडक्ट की खासियत होनी चाहिए, फीचर्स होने चाहिए, क्वालिटीज होनी चाहिए, कस्टमर एक गिवन प्रोडक्ट में क्या फीचर्स डिमांड करता है जो उसके लिए सेटेबल हो, कंफर्टेबल हो. मोबाइल फोन, लेट्स से 1 लाख का एक मोबाइल फोन है. आई आस्क द क्वेश्चन टू ऑल द व्यूअर्स, will anyone look forward to purchase the mobile phone worth or valuing rupees 1 lakh? And let's say that mobile phone is not equipped with a high-end camera. The question is, एक हाई-एंड कैमरा है, एक हाई-एंड मोबाइल फोन है, और वो 1 लाख रुपए का है, और आप उसको खरीदने जाते हो. एंड वंस यू रीच आउट टू द शॉप, आपको पता चलता है कि उस कैमरे में, उस मोबाइल फोन में एक्चुअली कैमरा नहीं है. मेरा क्वेश्चन ये है
क्या आप एक ऐसा मोबाइल फोन जो 1 लाख रुपए का है, एक यूनिट, एक पीस, एक प्रोडक्ट, क्या आप खरीदना पसंद करेंगे जो विदाउट कैमरा हो? तो किसी ने ऐसा मार्केटिंग मैनेजर ये आइडेंटिफाई किया कि पीपल टेंड टू लुक फॉरवर्ड टू नीड अ कैमरा इन अ मोबाइल फोन, एंड ही और शी देयरइन आइडेंटिफाइड द नीड ऑफ द कस्टमर, और वहां से मोबाइल फोन में कैमरे को इंस्टॉल किया गया, और इसलिए वो कंपनी सक्सेसफुल है, कामयाब है, एंड देयर इज नो इमेजिनेशन फैंटेसी ऑफ बाइंग अ हाई एंड वैल्यूड मोबाइल फोन विदाउट अ कैमरा, इजंट इट? लेट्स कम टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर हम देखें तो इस दुनिया में सारी चीजें लोगों से होती हैं। हमारे पेरेंट्स लोग हैं, हम लोग हैं, फाइन। हम कंपनीज में काम करते हैं, वहां भी लोग होते हैं, वो सारे ह्यूमंस हैं। तो दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि लोगों का सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, dismissal of professionals, suspension of professionals, fine, retirement of professionals, layout of professionals, retrenchment of professionals. Human resources को किस कैटेगरी पे हम रिक्रूट करेंगे, उनका जो रिक्रूटमेंट का स्टैंडर्ड्स ऑफ जजमेंट होगा हमारा, वो क्या होगा? उसको रिक्रूट करने के बाद हम उनको किस तरह ट्रेन करेंगे कि हमारी जो डिजायर्ड प्रोडक्टिविटी है वो अचीव हो पाए, हम उसे अचीव कर पाए। अगर लेट्स से उनके हमारी डिजायर्ड प्रोडक्टिविटी जो है, या हमारी डिजायर्ड प्रोडक्टिविटी अगर अचीव नहीं हो पाती है, तो हमें पता चलता है कि जो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी है और जो डिजायर्ड प्रोडक्टिविटी है, डिजायर्ड प्रोडक्टिविटी और एक्चुअल प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस है। तो हम ऐसा क्या करेंगे? कौन सा ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करेंगे? कौन सा ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लॉन्च करेंगे? कौन सा ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करेंगे जिसको प्रोवाइड करने के बाद, एम्प्लॉइज को उस ट्रेनिंग प्रोग्राम पे ट्रेन करने के बाद वो इतने डेवलप हो जाएंगे कि हमारी एक्चुअल प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे। हम एम्प्लॉइज को रिटेन कैसे करेंगे, कंपनी में जो है कंट्रोल कर कैसे रखेंगे, और रिटेन कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उनको रिटेन करना, उनको रोक कर रखना, चाहे वो सिंपैथेटिकली हो, चाहे वो बेस्ड ऑन कैजुअल रिलेशनशिप्स हो, based on salaries हो, based on incentivization हो, based on other factors of cost to companies हो, हम उन्हें कैसे होल्ड करके रखेंगे? एम्प्लॉय की कंट्रोलिंग, एम्प्लॉय को होल्डिंग, ठीक है, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन द वर्ल्ड इज टू डील विद द ह्यूमन बीइंग्स, इजंट इट? फोर्थ इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट. How do we see to operations management? Operations management basically talks about overall production of a factory or let's say a workshop. Let's say we're looking forward to start an organization. Let's say a manufacturing organization, a manufacturing unit. Let's say we're looking forward to produce a certain unit of products for a given organization. So the big question is, how many products are we supposed to produce? In how many months or year we are supposed to produce? What are the basic ingredients which are required to produce the product? Let's say a unit of 1 lakh is expected right in 6 months down the line. So to produce a unit of 1 lakh product of a given prototype in 6 months, what quantity of ingredient is required for the same? What quantity of ingredient is required for the same? The work space, or let's say the floor, the area of the floor which is required to produce that product, when and where the machineries will be installed, how many number of workforce or laborers are required to produce that product, what will be the wages or the salaries per month which we will be paying to them, and the total payout and cost incurred on the same. It is all operations management. All the strategies and activities which works right at back end is called operations management. And then last but not the least is all about international business management. Companies who are working in India, they are also operating outside India. Definitely many companies outside India and many companies in India have spread their hands globally and wins globally. And therein they need international business marketing or management, wherein they are able to understand the consumer behavior of customers which are in different domains, which are in different cities and locations, their ideas, their preferences,
their purchasing power parity, their idea of purchasing a product, their mindset, each and everything which is internationally, which is related internationally, that is taught in international business management. How customers which are outside India will be responding to your product. What certain changes are required in the product which is in the present, which is presently with us in a given prototype. Fine. So definitely the mindset of people's putting up at an urban area is definitely different from people who are putting up at rural areas. People who are putting up right in United States have a different mindset when compared to the people who are putting up in India. People in Saudi Arabia, UAE, United Arab Emirates, Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al Khaimah have a different mindset when you compare to the mindset of Indian people. So definitely these things are very, very sensitive. And as a company, as an organization, as a product developer, we are supposed to recognize, identify, empathize, understand their need, and then develop a product according to their compatibility level. So overall, there are other domains as well, but most importantly, these are 6 most important pillars, tissues, cells, ingredients of any business. Whether you study BBA or don't study BBA, even if you do study MBA, if you even don't study anything, these factors are required to be considered before starting any business, while operating any business, and last but not the least, when you look forward to expand your business. To know about the criteria and admission process, and definitely recognized and top colleges offering a 3-year BBA degree course, we will be creating and broadcasting a video shortly. Thank you.